Yes, good morning, all of you. I am Manu Upadhyay from RM Public School, and you are studying class ninth Economics. The chapter name is Palampur. Okay, as this is the first chapter, I in the first chapter I told you about Palampur, that Palampur is an hypothetical village, that is, it is an imaginary village. Okay, and in this village there are different types of peoples over here the peoples are belonging from upper caste, and the people are also belonging from SC and ST class. The houses of the upper class is made up of bricks, whereas the people of SC and ST class, their houses are made up of hay and straw, and they live in a corner of the village. And if we talk about the activity of the Palampur, the main activity of the Palampur is farming. So more than 75% of the people are engaged in farming. After that, we also came to know that in Palampur it is well connected with the roads. Okay, the main town of Palampur is Sahpur, and the biggest village, nearby biggest village is Raiganj. Okay, and it is well connected with the roads. The roads are all weathered roads. It means in all the seasons the routes are connected, and here all types of transportation are there. If we talk about the jeeps, tongas, all these types of transportation are done on this road. Okay, now apart from this the village are having good electricity. There is one primary health center and one private dispensary over there. There is also very good electric supply for the irrigation facilities. And apart from this, there is also um, there is also a primary school and a middle school. Okay, so we can see that this is a well developed village which is located in Uttar Pradesh. Okay, now after that we studied about the organization of production. Now for this we studied about the what is the main aim of production. So the aim of the production is to produce the goods and service that we want. And what are the factors requirement for the production? That is four. The first one is land, the second one is labor, the third one is physical. And in physical we have two types. The first one is fixed capitals such as machines, buildings. These are the fixed capitals. And the second one is the raw material and the money in the hand. And the fourth one is human capital. Okay, human capital. So the knowledge and the enterprises to be able to put together of land and labor is also very necessary. Okay, so these are called as the factors of productions. Okay, so up till here we have studied very well. Okay, now next one, what we are going to study today we are going to study about the farming in Palampur. Okay, the first one we are going to study that land is fixed in Palampur. Let us read about this. Okay, farming is the main production activity in Palampur. About 75% people who are working are dependent on farming for their livelihood. Okay, so farming is, as I told you in the first class also, that farming is the main activity of Palampur, and about 75% people are engaged in farming. Okay, and out of this 75%, they could be farmers or farm laborers. They Some people, those who are engaged in farming, some people may have land, and some people are landless also, but they are engaged in farming activities. Okay, they are working as a daily workers, daily wages worker. So they could be farmers or farm laborers. The well being of these people is closely related to the production of the
farms. Okay, there it means their livelihood is totally dependent on the production of the farms. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivated land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. Actually, what is happening over here? Let's see. Okay, actually, the land is fixed in Palampur, but the population is fixed. Population is not fixed. Population, day by day the population is increasing. Suppose take the example of India. In India, if we talk about the 50 years ago, in during the independence time, our population was very less. But right now the population as compared to the 50 years ago, right now it is 10 times more than that. Okay, so like that Palampur, the population of the people is not fixed, it is increasing day by day, but the land is fixed. We cannot increase the land of the Palampur. Although some of the wasteland, कुछ wasteland है, that is increased into cultivable, that has been changed into cultivable land, but this does not fulfill the production of the Palampur. लेकिन इतना काफ़ी नहीं है. ठीक है, तो लैंड जो है वो फिक्स है. आपका जो लैंड जो है आपका पालमपुर में वो फिक्स है, लेकिन पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रही है भैया, है कि नहीं है? तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो उसको उसके प्रोडक्शन के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए होगा. फिर भी जो है इसके लिए जो है कुछ जो है आपके वेस्टलैंड को जो है कल्टिवेबल लैंड में ट्रांसफॉर्म किया गया है. ठीक है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है. ठीक है, 1960 से जो है, सिंस 1960 इन पालमपुर देर हैज़ बिन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन. ओके, तो 1960s के बाद जो है लैंड एरिया में जो कल्टिवेटेड लैंड जो है उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है. नाउ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ measuring land is hectare. Okay, you have heard about the bigha. I know many of you heard about the land. बीघा, कट्ठा कहते हैं ना हम लोग, एक बीघा एक कट्ठा ऐसे बोलते हैं हम लोग. तो राइट डाउन 1 बीघा इज इक्वल टू 20 कट्ठा. 1 बीघा 20 कट्ठा मिलके 1 बीघा बनाते हैं. ठीक है, 1 बीघा इज इक्वल टू 20 कट्ठा. 1 बीघा इज इक्वल टू 20 कट्ठा. सेकेंड, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 hectare is equal to 32 kathas. 1 hectare is equal to 32 kathas. Okay, 1 bigha is equal to 20 kathas and 1 hectare is equal to 32 kathas. Okay, so this is the measuring unit. Okay, so if you talk about the farming in Palampur, तो अगर फार्मिंग की बात करें तो लैंड इज नॉट फिक्स्ड ओवर हियर. The land, the population is increasing but the land is fixed. Okay, second, the question is here, when the land is fixed, then how can we increase the production? Is there any way we can grow more from the same land? उसी land से, उतना ही land से हम लोग ज़्यादा कैसे grow कर सकते हैं? Let's see how to increase the production. In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. तो आपका जो पालमपुर मैंने शुरू में ही बताया था उत्तर प्रदेश, इसमें अभी दिया है. उत्तर प्रदेश का एक जो है उत्तर प्रदेश के एक विलेज की ही तरह जो है पालमपुर है. और यहाँ पर जो है
ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, सारे के सारे लैंड्स पर जो है कल्टीवेशन होता है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल, किसी भी लैंड को जो है ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। नाउ हियर ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा, these plants are used as cattle feeds. It is followed by cultivation of potatoes between October and December. In the winter season, rabi fields are sown with wheat. So we can see, तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, we can see that people in farmers in Palampur are growing three types of crops. There are three types of different types of, is it in Palampur it is not like that they are growing only one crop. They are growing three types of crops. What are these? Rabi crops, kharif crops, and jad crops. Jad example is given, uh, um, that is which is जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, these are grown in between the rabi and kharif crops for the business purpose, for the commercial purpose. And rabi and kharif crop, you all were very much aware about this rabi and kharif. Okay, so rabi crop are those crop which are harvested in summer. Okay, and kharif crop are those crops. Kharif crops are during the rainy seasons. Farmer grow jawar and bajra. Okay, done. So during the rainy season, kharif farmer grow jawar and bajra. These plants are used as cattle feeds. इसको जो है कैटल फीड्स के रूप में कैटल को खिलाने के लिए भी यूज़ किया जाता है जवार और बाजरा को। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज, उसके बाद पोटैटोज की कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है, बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर के बाद, अक्टूबर और दिसंबर के समय में पोटैटो की खेती की जाती है। इन द विंटर सीजन राबी आर ग्रोन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट्स आर ग्रोन। फ्रॉम द wheat produced, farmer keep enough wheat for the family consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. Okay, whatever the wheat is produced, farmer keep that wheat for the family consumption, and rest they sell it at the market at Raiganj. What is Raiganj? Raiganj is the nearest village, नियरेस्ट बिगेस्ट विलेज टू द पालमपुर। ओके, तो जो भी जो है वो कल्टीवेशन जो होता था आपका वीट का, तो वो अपने खाने के लिए रखते थे, और जो भी एक्स्ट्रा जो है आपका वीट की कल्टीवेशन होती थी तो उसको जो है वो लोग क्या करते थे, पालमपुर के लोग उसको जो है बेच देते थे। ठीक है, कहाँ बेचते थे? रायगंज में। रायगंज एक बड़ा गांव है आपका पालमपुर के बगल में। क्लियर? नाउ a part of the land area is also devoted to sugar cane which is harvested once every year. ठीक है, और कुछ जगहों पर जो है शुगर कैन की भी जो है खेती होती थी। ठीक है, और जो कि साल में एक बार होती थी। शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और उसके बाद शुगर कैन से जो है जैगरी, व्हाट इज जैगरी? इन हिंदी वी कॉल इट एज अ गुड़। गुड़ जो है, गुड़ को ही जो है हम लोग जैगरी कहते हैं। तो दिस शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म जैगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर। शाहपुर क्या था आपका? शाहपुर इज द नियरेस्ट टाउन टू द पालमपुर। नज़दीकी का जो है टाउन था आपका शाहपुर। तो शाहपुर में जो है गुड़ की जो है गुड़ को ले जा करके बेचते थे। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन हाउ दे इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन, द फर्स्ट रीजन that they started growing all the they started utilizing through all the cropping seasons, that is that is rabi, kharif and jaid crops. The main reason why farmers are able to grow three different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. Now how they are able to grow three different types of crops? Because there is availability of well developed system of irrigation. As I told you that in Palampur electricity is available, and due to electricity tube are also running, and due to tube the people are able to irrigate their land, and if they are able to irrigate their land, then they will able to
grow the three different types of crops. Okay. Now, electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate a small field. At this time पर्शियन व्हील्स, जो पर्शियन व्हील्स व्हील के थ्रू जो है गोल गोल घुमा करके जो है हम लोग जो है जिससे कि पानी निकालते हैं कुएं से, ठीक है, तो वो भी जो है बहुत जगहों पर था. पर्शियन व्हील्स वेयर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स. ओके, तो ये सारे चीज़ टेक्निक जो है यूज़ किए जा रहे थे ताकि जो है थ्री टाइप्स ऑफ जो है फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके. ओके, नाउ पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल्स could irrigate much larger area of land more effective. The first few tubewells were installed by the government. कुछ ट्यूबवेल्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया गया और soon however farmers started setting up private tubewells. और कुछ ही समय के बाद बहुत सारे फार्मर्स जो है उन्होंने जो है बहुत सारे प्राइवेट ट्यूबवेल्स को लगा लिए. ठीक है. एज द रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1970s तक जो है 200 हेक्टेयर लैंड तक जो है इरिगेशन होने लगा. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑफ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग इज दैट टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. एक से ज़्यादा जो है क्रॉप्स जो है एक ही खेत में उगाना एक साल के अंदर, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. ठीक है. अगर एक साल में एक क्रॉप उगाएंगे तो हम उसे सिंगल क्रॉपिंग कहेंगे. अगर एक साल में एक से ज़्यादा अगर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्ट्स. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. और ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे कि हम लोग जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें. ओके, नाउ ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप. जितने भी फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो कम से कम 2 क्रॉप्स तो उगाते ही हैं. मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज देयर थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स. बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि जो है थर्ड क्रॉप भी ग्रो करते हैं एज ए पोटैटो के रूप में. ठीक है, जैसे कि हम लोग ज़ैद क्रॉप भी कहते हैं. नॉट ऑल विलेज इन इंडिया have such high level of irrigation. Apart from riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low level of irrigation. So we can see that the northern plains, riverine plains, coastal regions, in these types of areas, well, the irrigation facilities is good over there. In these types of areas, three different types of cropping seasons are practiced, whereas other areas such as plateau region, Deccan Plateau, here only one crops are cultivated. Okay, of the total cultivated area in country, a little less than 40% is irrigated even today. In our country only 40% is irrigated only in India. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. So we can see that 60% of area is still remained still dependent totally on the rainfall. Okay. So this is the given area. In table 1.1 you can see that the cultivated area in 1950s it was 120, 1960 it was 130 million hectare, 2008 140. Out of the total land area is 320. We have studied in geography that total land area is 320 million square kilometer, million hectare. Okay, but the cultivated area is only 150 right now in 2008. Okay, the question asked over here is it important to increase
the area under irrigation. Why? You have to answer these questions. Okay. Yield is measured as crop production on a given piece of land during a single crop. Till the mid 1960s, the seeds used. So we have discussed this, the second. Now we are going to study about the third. First, how they increase the crop production by using the 3 different cropping seasons, and how they use it by the well developed system of irrigation. Now the second one is that through the green revolution. The green revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivate of wheats and rice using high yielding variety of seed. अब क्या होता है कि आपका 1960s लेट 1960 यानी कि 1965 से 70 के बीच में जो है एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जो है MS स्वामीनाथन को जाता है. किस जाता है? हु इंट्रोड्यूस ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? हु, पहला क्वेश्चन लिखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड green revolution in India? Who introduced green revolution in India? Who introduced green revolution in India? MS Swaminathan introduced green revolution in India. MS Swaminathan introduced green revolution in India. Now, अब जो है ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है? ग्रीन revolution is a process to increase the production. ग्रीन लिखिए, ग्रीन revolution is a system to increase the green revolution is a system to increase the production through HYV seeds, that is high yielding variety seeds, HYV seeds, pesticides, insecticides, and proper irrigation system. तो ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छा हो सके. ठीक है, इन सब सीड्स को यूज़ करके, अच्छे इंसेक्टिसाइड्स, अच्छे पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके, और साथ ही ज़्यादा इरिगेशन के थ्रू जो है उनको जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के सिस्टम को ही हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट इफेक्ट क्या पड़ा था? जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है मोस्टली इसका इम्पैक्ट पड़ा था पंजाब और हरियाणा पे, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था वीट पर. किस चीज़ पे? वीट पर. द प्रोडक्शन ऑफ वीट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट. ओके, now here high yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides. So these are the essential things for the green revolution. Farmers of Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. जो फार्मर्स ऑफ पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को जो थे उन्होंने ही सबसे पहले जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूटिलाइज किया था. Some of them bought from machinery like tractor and threshers which made plowing and harvesting faster. बहुत सारे ऐसे भी थे राज्य थे जो आपके स्टेट्स जो थे, उन्होंने प्रॉपर मशीनरीज खरीदी, ट्रैक्टर खरीदे, थ्रेशर मशीन्स खरीदे, ताकि हार्वेस्टिंग और प्लाविंग अच्छे से और जल्दी हो सके. दे वर रिवार्डेड विथ, और इसका कारण, और इससे हुआ क्या कि इससे जो है विच प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. इसे जो है प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो गई थी. फॉर एग्जाम्पल, इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोस फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर. पालमपुर में भी इस मेथड को यूज़ किया गया. पहले 1300 kg ही जो है सिर्फ पर हेक्टेयर पे यूज़ होता था, मतलब प्रोडक्शन होता था, जो कि जो है HYV सीड्स के वजह से जो है इट इंक्रीज टू 3200 kg पर हेक्टेयर.
क्लियर? चलिए इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे, ठीक है? राइट डाउन सम क्वेश्चन. व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? What is green revolution? Second question. Second question. How in Palampur? Second question. How in Palampur? How in Palampur? How in Palampur the production was, sorry, the land was increased. How in Palampur? How in Palampur the land production was increased? How in Palampur the land production was increased? Third question. How the people of Palampur were able to, how the people of Palampur were able to produce all the three cropping systems, systems. Last question. When was Green Revolution introduced? When was Green Revolution introduced, and which states practiced first the modern method of farming? Which states practice the modern methods of farming? Okay, done. Which states practice the modern method of farming? Done. Okay, done. That's all for today. Thank you and have a nice day. Stay home and stay safe. See you soon. Okay, thank you.